दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है सिंपल मैवरिक। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि हम आपको इंटरनेट से जुड़ी बेहतरीन और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाएँ। जानकारी और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ और हम इसी प्रेरणा से आगे भी आपके लिए बेहतरीन जानकारी से भरे वीडियोज़ बनाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि कोडिंग आखिर है क्या। दोस्तों अगर हम आसान शब्दों में समझें तो कोडिंग कंप्यूटर की भाषा है। कोडिंग को प्रोग्रामिंग के रूप से भी जाना जाता है और कोडिंग के जरिए ही कंप्यूटर को बताया जाता है कि उसे क्या करना है। तो सरल भाषा में कोडिंग कंप्यूटर की भाषा है और अगर आपको कोडिंग लैंग्वेज आती है तो आप बहुत ही आसानी से वेबसाइट या ऐप बना सकते हैं। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझने की है कि हाल ही में कोडिंग को लेकर इतना तवज्जो क्यों दिया जा रहा है और ये भी समझते हैं कि भारत जैसे विकासशील देश में कोडिंग का क्या स्थान है। दोस्तों मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको ये बताने में कि भारत सरकार के एचआरडी मंत्रालय ने हाल ही में जारी की गई अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कंप्यूटर कोडिंग को 6 स्टैंडर्ड से अनिवार्य कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया है 6 स्टैंडर्ड से। दोस्तों भारत सरकार का ये जो कदम है ये डिजिटल साक्षरता की नींव डालने में बहुत मदद करेगा। दोस्तों हमारे देश में शहरों से लेकर गांव तक इंटरनेट डेटा की स्पीड में काफ़ी तेज़ी आई है। ये बहुत ही अच्छा एक वातावरण तैयार कर रहा है उन बच्चों के लिए जो मेट्रो सिटी से दूर हैं, अब वो भी घर बैठ के सीख सकते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि कोडिंग कहाँ यूज़ होती है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. We have to go from ready to start. 2, 1, 0. Booster ignition and liftoff of Shuttle Endeavour with NASA's final space station crew compartment that brings a bay window view to our celestial backyard. With so many millions of kids at home, providing a creative outlet for learning is more important than ever. It's a perfect opportunity to learn computer science and how to code. Computer science is creative and engaging, and students love it. Here are some easy ways to get students started learning computer science. First, check out CodeBreak. Join me and my team at code.org along with some very special guests in a weekly interactive session. Together, we're hoping to make the largest live interactive classroom in history. Or you can try the Hour of Code. Code your own dance party at home, learn how to clean the oceans with artificial intelligence, explore worlds of Minecraft, build your own Flappy Bird, or make a Star Wars game. On code.org, you can find videos that teach how the internet works and how computers work. These short videos break down difficult concepts in a way that's accessible for anybody to learn. Plus, we have lots of inspirational videos from diverse role models from around the world to encourage students who may not typically consider themselves as computer scientists.
You can try one of our self-directed courses for every age. The Express course shows the basics of computer science and internet safety, and at the end of the course, kids create their very own game or story they can share. You can put some of those great ideas into action with App Lab. It's a fun and easy way to make your own unique apps. What will you create? Pre-readers can even play along with a course specially designed for them. And if you don't have a computer, that's no problem. There are terrific options that can be used on any smartphone like Lightbot, CodeSpark, or Grasshopper. Check out code.org. There's something for everyone, because anyone can learn. Give it a shot. I think it's really important for girls to study computer science. I think for a long time, the world thought that some things were for boys and some things were for girls, and everyone understands now that boys and girls can have equal opportunity. If we could just, support girls and give them that initial encouragement, that we can start balancing the scales, and then we won't even have to play with the equation because it will just be a natural flow. To be able to code gives you the freedom to build anything. And that is just so empowering. I like having that power in my own hands to express what's in my imagination using programming. Just the experience of programming gives you access to a new method of thinking. Everything becomes the steps that you can take towards a solution, and that is just extremely valuable. It's one thing to use software. It's a totally different thing to get to change how the software you use actually works. Yeah, all of my favorite memories from computer science are actually programming together with teams. I don't think CS is a solo thing. Nothing is. If you want to build something amazing, you usually have to do it in a team, and CS is no different. You all live in a time where expressing yourself, learning about different people, making a business, and a real difference in your communities is all totally possible. With computers, it's right at your fingertips. It's not about being a girl or being a boy. It's about being talented. Computer science needs more talented people who are not afraid of being creative and making the world a better place. Jump into it, learn, just try and take one class, give it 1 hour. It's amazing what you can learn in 1 hour. And that's what's so exciting about Hour of Code. All of you were able to participate from all parts of the country, at all ages, from all different backgrounds, and that's what will create the right opportunities for everyone. Every girl deserves to take part in creating the technology that will change our world and change who runs it. I challenge girls in every single country to learn 1 hour of code. Technology touches every part of our lives. So if you can change technology, you can change the world. दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एंड में मैं आप सबसे दोबारा यही कहना चाहूँगा कि इट्स अ फ्री रिसोर्स जो आपको कोडिंग सिखा रहा है, प्लीज़ यूज़ इट। और इससे बच्चों की क्रिएटिविटी में काफ़ी इजाफा होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती हैं और कम्युनिकेशंस में भी हेल्प करता है।